India is known as a land of agriculture. And even though we now feature malls and air-conditioned office complexes aplenty, we still remain rooted to the soil. And while farmers grow crops elsewhere, in Jharkhand they grow something quite different. Insects. In the state of Jharkhand, cultivators rear lac insects or Kerria lacca, the tiny creatures that give us lacquer. Research and development on the cultivation and processing of lac is done at the Indian Lac Research Institute in Ranchi. Wildfilmsindia sent a team down to Jharkhand to understand how lacquer is still being produced in India. We also tried to figure out the support that the industry is receiving from the central and state governments in order to keep this ancient craft and industry alive. A tiny red insect produces shellac. Swarms of these insects feed on certain trees that grow mainly in India and Thailand and are known as lac trees. One of their favorites is the Indian flame of the forest tree, also known as dhak, palash or tesu. The flowers of this tree are also, incidentally, used to make the traditional orange gulal used during the Holi festival. लाख की खेती खास तौर पे वर्षा आधारित जगहों के लिए बहुत आजीविका का एक बड़ा अच्छा साधन है और ख़ास तौर पे ऐसे प्रदेश जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, वहाँ के ज़्यादातर किसान जहाँ पे खेती ज़्यादा नहीं होती है उनके लिए लाख की खेती एक बहुत महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है। ख़ास तौर पे अगर हम लाख इंसेक्ट की बात करते हैं तो उन्हें कुल खेती से होने वाली आमदनी का लगभग 25 से 30% हिस्सा जो है लाख की खेती से मिलता है। और दूसरा उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब लाख की खेती करते हैं तो जो वृक्ष उनके पास उपलब्ध होते हैं उनका वैसे कोई उपयोग नहीं होता है, तो उन वृक्षों का उपयोग करके वो इसे एक आजीविका का अच्छा साधन बना सकते हैं। Kusum and bear trees are also favorite hosts of the lacca beetle, of which the male is a reddish black and the female a yellowish brown. जैसा कि किसान भाई जानते हैं, उनकी नज़रों में सिर्फ एक ही प्रकार का लाख कीड़ा होता है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो हमारे देश में लगभग 26 तरह के अलग अलग तरह के कीट पाए जाते हैं लाख के। और उन लाख कीटों में से ज़्यादा का उपयोग जो होता है उनमें से मुख्यतः 3 स्पीशीज़ हैं, कैरिया लेक्का, कैरिया चाइनेंसिस और कैरिया शारदा। कैरिया लेक्का की खेती ज़्यादातर बड़े हिस्से में होती है। कैरिया चाइनेंसिस ज़्यादातर हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, मेघालय और असम जैसे राज्यों में। और कैरिया शारदा ज़्यादातर जो हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं उनके अंदर पाया जाता है। हमारे संस्थान का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि हम देश के अलग अलग भागों में जाकर विभिन्न प्रकार के जो लाख कीट हैं उनको यहाँ पर लेकर आएँ, इकट्ठा करें और उनका इवैल्यूएशन करें। उनमें से जो कीट हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको हम फिर मल्टीप्लाई करके बढ़ा करके किसानों तक लेके जाते हैं। Insecticide is sprayed onto the host trees in order to prevent ants and other insect predators from eating up the lacca beetles. Horticultural crops and vegetables are often mixed into the land use to create a lac integrated farming system among the flame of the forest tree plantations.
ख़ास तौर पे लाख को खेती के साथ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसी खेती के ज़मीन के टुकड़े से हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, कम पूंजी में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। Workers collect the sticks on which the lacquer resin is affixed from the tree's branches as part of the refining process. They cut hordes of these twigs or sticks and tie them up in bundles. Then each stick is scratched vigorously by workers to scrape off the secretion, which is the resin secreted by the insects. This process can also be done mechanically in a lac scraper crusher. Followed by further mechanical action in a grader and lac winnower. Since the resulting ground material is quite impure, containing resin, insect remains, twigs, leaves and the like, the mixture is forced through the lac grader to sort out the larger impurities. It is then washed and poured into yet another machine and water is poured to finally cleanse it. Water is also admixed to create crude or pure lac dyes, which tend to be deep red-colored liquids. The mixture is then spread out on the floor to dry. This lac is finally used in a number of high-end handicraft and manufactured products, like in the manufacturing of lac dye, lacquer bangles, paints, glass, ceramics and jewellery. Other products include hydrolyzed lac sealing wax, abrasive wheels, lac dye used in metal foil, bangles, lac colour for paintings, storage boxes for jewellery and other fashionable high-value items, as well as in nail polish. Lac is used to polish fruit and keep it fresh and shiny for longer with the help of a lac-based fruit coating. It is even used to make certain indigenous medicines. इसी प्रकार से अगर आप जाएंगे देखेंगे कि लाख की खेती से जो होने के बाद जो उत्पादन बनता है उससे हमारे देश को एक फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी मात्रा में मिलता है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी आमदनी होती है। लाख की खेती के बाद जो लाख आती है उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी बनते हैं और उनका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है, ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी या खाद्य पदार्थों में और दूसरे अन्य उत्पाद हैं जिस तरह से सरफेस कोटिंग हम जिसको कहते हैं उसका उपयोग इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। इसी प्रकार से इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए लाख से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, किस तरह का उत्पाद हो सकता है, किस तरह से हम उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इन चीज़ों पर भी हमने अलग अलग तरह की प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन होने की वजह से वो इंडस्ट्री को भी और ज़्यादा लाभ हो सकता है। जहाँ तक हमारे प्राकृतिक भारतीय राख एवं संस्थान की बात है, यहाँ पर हम किसानों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करते हैं। किसान किस ढंग से अच्छा उत्पादन ले पाएँ, अच्छी गुणवत्ता का लाख उत्पादन कर पाएँ और गुणवत्ता का लाख उत्पादन करने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से मुनाफा हो, उस विषय पर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। Lacquer is an ancient art and industry. It may not survive for long in modern time. Given the complexity of cultivating the lacquer beetles, harvesting their resin and making products that fewer and fewer people seem to know about and may not be willing to pay high prices for. Nonetheless, it is important for us to understand how this unique product is created and how much cultural and historical importance lacquer was given in ancient India and China.